slow here, but once we get past the trees, we'll pick up speed. Now we are in the cable car. As soon as we will leave the trees, the speed will go up as he announces. If you look straight ahead, you'll see our famous carving. The carving is 90 by 190 feet, goes 42 feet deep into the mountain. You can actually fit 2 school buses side by side on the back end of the middle horse. A 6-foot tall man or woman can even fit inside of its mouth. The carving itself is the largest carving in the United States. It beat Mount Rushmore by 30 feet. Stone Mountain as a whole is the largest piece of exposed granite in the entire world, but you're only seeing about 10% of it. The rest of the mountain goes 2 to 3 miles beneath the earth. If you look to your left, you will see the red car. It may look like it's going faster, but we're going at the exact same speed. Oh, same speed. As we reach this tower right here, we'll experience a slight tilt and swing. So feel free to hold on to something or someone. So we are going up now. We are almost there. And here comes our tilt and swing. This is swing. Very nice swing. It's like just swing before. If you water to the rock and you look out into the distance on your right hand side, you'll see the city of Atlanta. Right next to Atlanta is Buckhead, and right next to Buckhead is Sandy Springs. Wow. It was a nice ride on the top of the Blue Mountain. Show you more. This is welcome to the top of Stone Mountain. As we dock here, we may experience a little bit of bumping, but don't worry, that is totally normal. So this is top of the mountain. Here the view is fully loaded in cart. All As you exit the car, please watch your step and I hope God have a now we wonderful will day. be exiting the cart. That is the big deal. Driving it. We are on the mountain now. So on this mountain, it's like a feeling of a moon. Now we are on the moon surface. And we can see the city of Atlanta right there. I can focus city. All around beautiful scenery. ये चांद के नज़ारे, ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत। ये वही केबल कार्ट का सिस्टम. People are still coming, and the space is so big that everybody will be scattered, and everybody taking to the best of the movies. Surface of the mountain. Ooh, that is city. So ये सारी
सारी सीनिक व्यूज़ हैं। अभी हम आपको चारों तरफ से एक राउंड दिलाते हैं, फिर हम कैमरे को बंद कर देंगे। ये है एक तारीखी मकाम, ये है स्टोन माउंटेन। दिखाएं ज़रा सामने फॉरेस्ट लैंड। एंड अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमें जंगल ही नज़र आ रहा है, सिवाय इस तरफ जो बिल्डिंग्स हैं अगर हम उनको छोड़ दें, सिर्फ इस तरफ देखें ये पूरा ग्रीनरी लाइक लुकिंग लाइक अ फॉरेस्ट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जंगल है, ठीक है। और हम चांद की सतह पर איפה אתם גרים? תגיד לי, הפירות האלה שאובים מאיפה? איזה פירות? האיפוס כזה מלא פירות. בורגר. זה הקרים צ'יז לא כשר. काइट्स लाए हुए हैं और वो अभी काइट्स भी उड़ा रहे हैं और कुछ लोग अपने लोगों को मसरूफ हैं। तो अभी हम आपको मज़ीद सीन दिखाएंगे इस जगह के। एक और सीनिक व्यू हमने आपके लिए रिकॉर्ड करना है और वो ये है। सो ये नीचे जहाँ हमारी पार्किंग है वो नज़र आ रही है। Like a view from the aeroplane or from the ये वापस जाना बहुत मुश्किल है, देखें किस कदर मुश्किल से स्लोप बहुत ज़्यादा है। लोग बैठे हैं यहाँ और वहाँ हर तरफ। ये नीचे रिवर और चारों तरफ दरख्त ही दरख्त। All around nature. So we are on the stone mountain. Look at the view, the jungle. I am giving you this view. I will walk through here for you. All around beauty, natural beauty, historic beauty. After this fence, the slope is so much that they have put this fence. You cannot go beyond this. And from the downside, it looks like a straight hill, but on the top, it's like a grass. And there's a butterfly. Tree on the mountain. Can you imagine? Trees on the mountain. टॉप ऑफ द माउंटेन दरख्त जो हैं उगे हुए हैं, घास भी निकल रही है। इज़ अ ब्यूटीफुल व्यूज। स्टोन माउंटेन, टॉप क्वालिटी माउंटेन। और ये देखें माउंटेन की ऊपर दरख्त, इतने ज़्यादा दरख्त माउंटेन के ऊपर, खुदा की कुदरत है। ग्रेनाइट के ऊपर दरख्त किस तरह निकले हुए हैं। और वो पत्थर ज़रा फोकस कीजिए, सामने ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक अलहदा से पत्थर फ्लोट कर रहा है और ये लाइका बिल्कुल उड़न तश्तरी लग रही है। और ये देखें दरख्त कहाँ से निकले हुए हैं, बिल्कुल जड़ में से। तो वो पत्थर अगर फोकस हो तो वो भी बड़ा प्यारा पत्थर है। और इसके बाद अब हम दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर कुछ और नज़ारे आपको दिखाएंगे।